Hello everyone, my name is Akhil and I welcome all of you to my YouTube channel Amazing Paramedical. Directly starting with today's topic, first I would like to share some information with paramedical students. Students, as we already know that the annual examinations are approaching nearer, that might be conducted in the month of November. Right now, students must be busy with their exam preparation. The previous year question papers play a vital role in your examinations, as we all know that thing. So, I have planned to start a new video series on solving the previous year exam question papers. So, my next upcoming videos will be completely based on the previous year exam question papers, in which I will be solving for you people the most repeated questions from all your subjects. That might be anatomy, physiology, biochemistry, microbiology, and all other subjects. Okay. Apart from solving them for you, I will be discussing each and every question in detail for you, which will be a very much helpful for you people for your preparation and all. Okay. So make sure that you don't miss out those videos. Okay, subscribe to my channel, hit the bell icon to get time to time update about my videos. Okay, along with this, please share the videos as much as possible with your other paramedical classmates. Okay, yes, students, today's topic is plasma and plasma proteins. It is one of the most expected question for your biochemistry and physiology exams. Okay, yes, plasma is the liquid portion of our blood. It contains blood cells and proteins in it. It constitutes about 55 to 60% of our blood. ओके सो प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं. ये हमारे ब्लड का 55 to 60% का हिस्सा प्लाज्मा ही होता है. ओके नाउ assume that if I were to take my blood sample in a test tube and if I centrifuge it, after the centrifugation, what I can find is the blood is divided into three layers on the basis of density. The topmost layer will be plasma. The secondmost layer will be buffy coat. That buffy coat is formed of white blood cells and platelets. The thirdmost layer, that will be erythrocytes, that will be mainly formed of red blood cells. Okay, the topmost layer, plasma, which is 55% of your volume, as you can see here, that will be composed of water, proteins, nutrients and electrolytes, and we can also find some waste and some gases also. Okay, yes students, now we will discuss in detail about the composition of plasma and what all it contains. Okay, plasma is mainly made up of water. 90 to 92% of plasma is made up of water, students. Okay, so if there is increase in water or decrease in water volume in our body, that will affect on the plasma and which will again affect on the blood volume as well. Okay, so हमारे प्लाज्मा का सबसे मेजर हिस्सा क्या होता है? वाटर ही होता है. ओके, वाटर कितना होता है? वाटर का पोर्शन 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है किसमें? प्लाज्मा में. अगर वाटर में किसी भी तरह की इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्लाज्मा पे इफेक्ट करेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम पे इफेक्ट करेगा, एंड प्लाज्मा का वॉल्यूम अगर चेंजेस हुआ तो वो ब्लड वॉल्यूम पे इफेक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू, इफ देयर इज डिक्रीज इन वाटर इन आवर बॉडी, डिहाइड्रेशन के स्टेट में जब हमारी बॉडी में वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है उस टाइम प्लाज्मा का वॉल्यूम भी डिक्रीज हुए रहता है, एंड दैट डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट विल लीड टू डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड. Okay, blood volume will get decreased in our body, okay, which is not normal thing. Okay, so water is the main source, the water is the major component of our plasma. Okay, it acts as a solvent and transport medium as well. Okay, the second main component here, as you can see, that is plasma proteins. Okay, plasma proteins, that is 7 to 8%. Okay, 7 to 8%
Although there are many proteins can be found in our plasma, but there are three major proteins which are found in a large quantity. They are albumin, globulins and fibrinogen. Okay, सो हमारे ब्लड में सेकेंड जो प्लाज्मा का जो कंपोनेंट, सेकेंड मेजर कंपोनेंट जो 7 to 8% होता है, वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स. ओके, जो प्रोटीन्स जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं उनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स करके बोलते हैं. बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, बट उनमें तीन ऐसे प्रोटीन हैं जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि अल्बुमिन हो सकता है, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजन. ओके, यस. After this, the third main component of our plasma is solutes, other solutes which are present in 1 to 2% range. Okay, so in them the first major component is electrolytes. Okay, electrolytes or the ions. Okay, so electrolytes such as sodium, potassium, calcium, bicarbonate, chloride and all, these are the very common electrolytes which are found in our plasma. ओके, सो हमारे ब्लड में प्लाज्मा के अंदर जो थर्ड मेन कंपोनेंट होता है जो कि 1 to 2% के रेंज में रहेगा, वो होते हैं सोल्यूट्स, जिनमें फर्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है. ओके, सो सोडियम, this chloride, potassium, these will be responsible for the fluid balance in our body. Okay, calcium will be responsible for the action potential, bicarbonate will be responsible for the pH balance. Okay, so they play a vital role actually. Okay, although they are present in less quantity, but they are very much important. The second main component that is our nutrients. Okay, nutrients भी देखने को मिलते हैं हमारे प्लाज्मा में. nutrients जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं. कहां से रहे न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लाज्मा में? जो भी हम डाइट के थ्रू जो हम न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर वापस हमारे ब्लड में आए हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को देखने को मिलता है प्लाज्मा में फिर से. और थर्ड मेन कंपोनेंट होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स. वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन हो सकता है, बिलिरुबिन हो सकता है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द मसल मेटाबॉलिज्म. ओके, वहां का वेस्ट प्रोडक्ट होगा मसल मेटाबॉलिज्म का, वहां से हम लोगों को देखने को मिलेगा प्लाज्मा में. बिलिरुबिन जो कि एंड प्रोडक्ट है हमारे आरबीसीज का, वो हम लोगों को देखने मिल सकता है. ओके, द नेक्स्ट मेन कंपोनेंट इज डिसॉल्व्ड गैसेस. द गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑल. These are the gases that are found very commonly in our plasma. The last component that is found in our plasma, that will be regulatory substances. The regulatory substances such as hormones and enzymes. Okay, these are found very commonly in our plasma. Okay, yes. Okay, students, now we will discuss the last part of this topic is plasma proteins. Okay. On plasma proteins, they have asked many questions. The questions are like functions of plasma proteins, name the plasma proteins and mention functions of any one, functions of plasma proteins, classification of plasma proteins, define plasma proteins. Okay, normal values of plasma proteins. There are many questions that have been asked on this topic. Okay, as I was telling you in the beginning of my video. Okay, so before directly starting with the functions of plasma proteins, first you have to write in your examination the first normal values you have to write. Okay, the normal values are nothing but in what quantity they are found in our blood. Okay, so albumin is found in 4.7 gram per dl, globulin is found in 2.3 gram per dl, fibrinogen is found in 0.3 gram per dl. Okay, these are some normal values of our plasma proteins. Okay, remember them. Okay, the next part we are going to discuss is functions of plasma proteins now. Okay, so the first plasma protein here, that is albumin. Albumin, as I was telling you, it is the most abundant plasma protein. Most abundant meaning what here? It is found in a large quantity. Comparatively, if we compare it to the other proteins, it is found in large quantity in our blood. Okay, yes.
and this albumin is synthesized by our liver. Okay, it is primarily synthesized by our liver. ठीक है, so अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है अल्बुमिन। ओके, अल्बुमिन हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। ओके, एंड इसको बनाता कौन है, इसको लिवर प्रोड्यूस करता है, लिवर सीक्रेट करता है इसको। ओके, इसके फंक्शंस क्या होंगे अब। ओके, व्हाट विल बी इट्स फंक्शंस नाउ। ओके, सो ये इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है अल्बुमिन का, ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है हमारे ब्लड में। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ इट विल बी मेंटेनिंग इट, सी हियर there is a diagram here, this is nothing but blood capillary diagram. Okay, ये blood capillary का diagram होता है। this right side will be the arterial end बोलेंगे, इसको arterial end बोलेंगे। this here blue और purple side को हम venous end करके बोलेंगे। okay, so from this arterial end जैसे ही यहाँ से arterial blood enter करेगा। okay, arterial blood is something which is full of oxygen and nutrition. okay, so when it enters into this arterial capillary end, okay, arterial capillary end, the plasma will start slowly moving outward, the plasma will slowly start escaping out of this capillary, okay, to supply all the nutrition, all the oxygen to these टिश्यूज। प्लाज्मा क्या करेगा, अभी इस कैपिलरी से स्लोली बाहर मूव होने लगेगा। मूव होके कहां जाएगा, इन टिश्यूज के पास जाएगा। क्यों जाएगा, इन सबको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। ओके, सो जैसे ही यहां से प्लाज्मा मूव आउट हुआ है इस स्पेस में, इस येलो कलर जहां पे मैं मार्क किया हूं, इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। जैसे यहां से मूव हुआ है, सडनली यहां पे इस आर्टेरियल कैपिलरी के एंड में क्या हो जाएगा, देयर विल बी सडन डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। यहां पे ब्लड वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि प्लाज्मा जो यहां से बाहर मूव आउट हुआ है सारा अपना वाटर कंटेंट को बाहर लेके चले गया है। ओके, सो टू अगेन इंक्रीज दिस ब्लड वॉल्यूम, इस ब्लड वॉल्यूम को फिर से बढ़ाने के लिए अल्बुमिन्स आएंगे। अल्बुमिन आके क्या करेंगे, यहां इस आर्टेरियल कैपिलरी एंड में ऐसा ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे। इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से यहां पे जितना भी वाटर होगा वो वाटर वापस फिर से खींचा चला आएगा अंदर, वापस फिर से यहां से खींचा चला आएगा, यहां पर अंदर आ जाएगा सारा आर्टेरियल कैपिलरी में, और वापस फिर से ब्लड वॉल्यूम का इंक्रीज देखने को मिलेगा। Okay, so what will happen here, students, the plasma which has moved into this interstitial place to give out all the nutrition and oxygen to them, the tissues and all, there will be decrease in the blood volume in this arterial capillary end. Okay, so what albumin will do here, it will create such osmotic pressure that will pull back all the water here, water has been moved out, the all water will be again pulled back into this arterial capillary end, and that will again lead to increase in the blood volume. This is how it will perform its osmotic pressure function here. Okay, yes, the next function that performs it does is like transport protein. Okay, it also transports variety of substances in our blood. The substances are like the substances which are not soluble, which are not water soluble. Okay, fatty acids, bilirubin, steroid hormones, drugs, calcium, these are not water soluble, actually they are all lipid soluble substances. So these substances are again carried by this albumin to their destination. Okay, albumin का दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये फैटी एसिड्स को, बिलिरुबिन को, स्टेरॉइड हार्मोन्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकते हैं। इनको क्यों ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। सो इनको ये क्या करेगा, इनको अपने डेस्टिनेशन तक ये अल्बुमिन इनको वहां तक जाके पहुंचाएगा। सो इसका ये मेजर फंक्शन होता है। ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन इज ग्लोबुलिन्स। Okay, globulins are again classified into three types: alpha globulin, beta globulin and gamma globulin. Okay, globulins है हमारे नेक्स्ट प्रोटीन जो कि तीन टाइप में डिवाइडेड है, अल्फा, बीटा एंड गामा में। ओके, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मेटल आयॉन्स। ओके, इवन दे आर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ही होते हैं अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन। ये क्या ट्रांसफर करेंगे, मेटल आयॉन्स को ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है हमारे बॉडी में। ओके, गामा ग्लोबुलिन्स ऐसे होंगे हमारे बॉडी में, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स करके भी बुलाएंगे। ये एक एंटीबॉडीज का काम करेंगे हमारे बॉडी में, और इनको लिवर नहीं बनाता है। इनको कौन बनाते हैं, इनको प्लाज्मा सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स इनको बनाते हैं हमारे बॉडी में। ओके,
Yes. The last protein is here fibrinogen. Okay, fibrinogen जो कि हमारी बॉडी में फिर से लिवर ही बनाता है. ये इनका काम क्या होता है हमारे बॉडी में? ब्लड कोएगुलेशन में ये काम करते हैं, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने का काम करता है ये fibrinogen. Okay, they are totally responsible for the blood clotting. Whenever there is any injury, whenever the blood is flowing out, these fibrins will come and they'll form a clot. Okay, due to which the bleeding will stop. Okay, yes. So this is all about plasma proteins and their important questions here. Okay, so students, don't miss out this question. It is most expected for your physiology and biochemistry examination. Okay, so be prepared with this answer. Okay, so if there are any feedbacks that you want to give regarding this video, please give your feedback in the comment section. Okay, so we will meet in the next video, in which I will be starting with a new video series of solving the previous year question papers. Okay, yes students, thank you all. Subscribe to my channel, keep sharing, keep learning. Thank you.